Hello. Good morning, everybody. Good morning. Yes. आज और एक बहुत ही मजेदार एक्सपायरी हुई है. गैप अप हुआ, फिर गैप फिल हो गया, मार्केट नीचे आया. यू नो पुट बायर्स का धमाल था, कॉल सेलर्स का भी धमाल था. और लास्ट फ्यू डेज हैव बीन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एक्साइटिंग, अनप्रेसिडेंटेड. मजा आ रहा था बिकॉज एक वॉर की सिचुएशन जो थी उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट भी कर रहा था ओके सिचुएशंस को. सो it was all in all, oops, I think I yeah, it was all in all a wonderful experience. तो जिन्होंने इस मार्केट को ट्रेड किया है उनके लिए भी बहुत बढ़िया तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसे मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना चाहिए. मेरा जो व्यू था बेरिश था. ओके. और लास्ट संडे फ्राइडे, लास्ट वीक फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे से मैं बेरिश ही था. और मेरा एक ऐसा मानना था कि मंडे ट्यूसडे भी मार्केट नीचे जाएगा. ओके. मेरे एक बीच में आई ओपनर हुआ था, उसमें भी मैंने बजाज फाइनेंस वगैरह ऐसे स्टॉक्स को शॉर्ट किया था. एंड आई वाज बेरिश ऑन द मार्केट. मैंने बैंक निफ्टी के पुट्स लिए थे थर्सडे को, जो प्रीवियस थर्सडे, नेक्स्ट एक्सपायरी के. व्हाई? बिकॉज आई वाज बेरिश. ओके. एंड लेकिन मंडे और ट्यूसडे को ओके आई स्टार्टेड कवरिंग माय शॉर्ट पोजीशंस. इनफैक्ट एक एक दौर ऐसा आया था कि मुझे लगा था कि मार्केट शायद 16,000 के वापस ऊपर नहीं जाएगा. बट मेरा वॉट इफ रेडी था कि अगर 16,000 के ऊपर जाएगा तो मार्केट वापस ऊपर जा सकता है. ओके. सो ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जब भी आप ट्रेड करो या कोई एक व्यू बनाओ. सो वही मैं आपको आज समझाने वाला हूँ कि मैंने इस मार्केट को लास्ट एक दो महीने से, एक दो हफ्ते से कैसे ट्रेड किया है. डेफिनेटली देयर कैन बी गुड लेसन्स लर्न फॉर एवरीबडी. सो लेट्स सी. और एक है कि मैंने क्रूड ऑयल शॉर्ट किया था परसों से. और क्यों क्यों ये बताता हूँ. मुझे लगता है मेजर फिफ्थ वेव खत्म हुई है क्रूड ऑयल में. टिपिकल होता है कमोडिटीज में ऐसे ही डायनामिक मूव आती है एट द एंड ऑफ द लेग. द फाइनल लेग जो होता है, फाइनल लेग यानी फाइनल मूवमेंट इन कमोडिटीज, उसमें निकेल है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, क्रूड है. सारे कमोडिटीज में एक फाइनल फिफ्थ वेव जैसी दिखी है मुझे. और आज भी मैंने क्रूड शॉर्ट किया है. अभी थोड़ा लॉस चल रहा है, जो मैंने शॉर्ट किया उससे थोड़ा ऊपर है, लेकिन मैंने पोजीशन बहुत ही कम ली है इसलिए लॉस है. मैंने कल कवर कर लिए थे, उसके ऊपर थोड़ा भाव मिला इसलिए मैंने शॉर्ट किया वापस. सो कल मेरा आई ओपनर भी था, लाइव आई ओपनर था कोलकाता में. और कोलकाता के लोगों ने बहुत प्यार दिया. आज मैं किसी और सिटी में हूँ, भुवनेश्वर में हूँ. यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलने वाला हूँ. कल हमारा लाइव सेशन है भुवनेश्वर में, लाइव मार्केट सेशन रहेगा. तो परसों कोलकाता के स्टूडेंट्स के साथ था. कल मेरा एक आई ओपनर हुआ ऑनलाइन, ऑफलाइन में. ऑलमोस्ट 2 साल के बाद 8 मार्च 2020 को मेरा एक आई ओपनर हुआ था दिल्ली में. उसके बाद 2 साल के बाद मैं कोलकाता में 9 मार्च को मैंने आई ओपनर किया. और उस आई ओपनर में पहली बार इट वाज लाइक अ लाइव मार्केट, क्योंकि यूजुअली आई ओपनर संडे को हुआ करते हैं, बट इस बार वो वीकडे में था और मार्केट चालू था. सो आई कुड शो माय क्रूड ऑयल के ट्रेड्स व्हिच आई हैड शॉर्टेड यस्टरडे. आई कुड शो देम एंड स्टूडेंट्स कुड, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी थे जो आस्था के बारे में बताने आए थे, जो नए लोग आए थे उनको. तो वो देख के बहुत धमाल आया. आई एम श्योर सम ऑफ यू मस्ट बी देयर वाचिंग. यस्टरडे हमने जो धमाल किया, और क्रूड ऑयल उसके बाद ऑलमोस्ट अनदर 5% टूटा है. सो लेट्स बिगिन. मैं आई वांट टू शो यू हाउ आई हैव बीन पोजीशनिंग माई सेल्फ फॉर दिस मार्केट. एंड ताकि आप भी कुछ ना कुछ सीखो. लोग कहते हैं आपके ट्रेड देख के हमें क्या फायदा. अरे अगर फायदा नहीं है तो मत देखो. अदरवाइज फायदा है तो देखो. कौन ट्रेडर की सोच कैसी होती है वो समझ में आएगा आपको. सो यस, एक्चुअली हम देखेंगे तो ये नेचुरल गैस वगैरह, तो उसमें नेचुरल गैस इज अनदर वेरी वीक कमोडिटी मुझे लगता है. इट्स बीन मेकिंग लोअर हाइज ओनली हियर. यू कैन सी देयर इज बीन अ नाइस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस. सो ये नेचुरल गैस का चार्ट है. एंड आई बिलीव वी मे कम समवेयर हियर. 314 वगैरह आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में. I'm trying to short natural gas, but I've not got an entry yet. मेरी ऑर्डर्स खड़ी है वहां पर. ये रिजेक्ट हुई ऑर्डर बिकॉज मार्जिन का थोड़ा इशू था. 359 में मैंने एक ऑर्डर रखी है. ऑलराइट. कॉपर या जितने भी आप कमोडिटीज देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है क्रूड ऑयल. सो अगर क्रूड का चार्ट हम देखें
So यूएस ऑयल, या चलो हमारा देसी चार्ट ही देख लेते हैं क्रूड का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, yeah, these are my counts on this. So this was fifth wave, so to speak. Okay, so this was a perfect fifth wave on crude. अगर आप वीकली चार्ट देखो तो और भी समझ में आएगा, ये 1 2 3 4 5, एंड जो फिफ्थ वेव है इसके अंदर भी आपको 5 वेव स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5, एंड दिस वाज अ वेरी डायनामिक फिफ्थ वेव, एंड आई बिलीव crude is a top. Okay, and as long as crude doesn't go above 115, okay, in international markets. Let's take a look at crude chart in the international markets also. मैं जरा यूएस ऑयल का चार्ट दिखाता हूँ। So US oil monthly chart, this is what it is. Okay, so we have to see whether it conquers this 115 level, and that was a very crucial level which it actually broke out, and now it is below that level. Okay, so this is a wonderful opportunity to again short. मैंने कुछ short positions लिए हैं, partial positions लिए हैं, बड़ी position नहीं लिए मैंने। It's about 30 नहीं, ज़्यादा रहेंगे। एक मिनट, मैं लॉट और सेल करता हूँ ताकि समझ में आए। हाँ वही, वो पूरा 61 लॉट्स मैंने सेल किया। देयर इज अ 5,85,000 का लॉस है। ओके, 5.5 लाख का मेरा लॉस है, बट आई हैव मेड मच मोर देन दैट यस्टरडे when I traded this. I had a positional short and I did intraday short when I was doing this eye opener also. So this is okay. I mean, even if it goes up, I'm going to short it again. So ये मेरे stop loss is clear है इसमें। Okay, so I believe there is this 1 2 3 4 5, now the fall has started, so first wave is over. Okay, and I believe we could be doing a ABC kind of a thing, and और अगर ये थोड़ा confirm करेगा तो I may add my more into this positions. So that's my plan. So let's see what happens. This is what I plan to do. My plan is ready with proper stop loss. Okay, so this is where I would like to keep my stop loss. अगर इसके ऊपर यहाँ तक भी मिला तो मैं और short positions add करूँगा। Yes, there is a loss of almost now 6 lakhs. Okay, but that's okay, pretty normal. क्योंकि करेंसी में मैंने जैसे करेंसी आज यूएस डॉलर में बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट मोर देन 80 लाख का प्रॉफिट है इसमें। यूरो आईएनआर मैंने कल लॉन्ग किया था क्लोजिंग में, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। सो ये होता है। और आज का ट्रेड था टाटा स्टील का, मैं टाटा स्टील का ट्रेड भी दिखाऊंगा। बट अगेन बिफोर दैट, हाउ टू अप्रोच एंड हाउ आई वाज अप्रोचिंग दिस मार्केट में जरा बताता हूँ। बैंक निफ्टी आई वाज शॉर्ट। ओके, एंड ये जो था लास्ट इसके बाद 24 फरवरी के बाद, आफ्टर दिस डे आई वाज शॉर्ट। और अगर हम 3 मार्च में भी मैंने इसके बाद जो भी बाउंसेस आए मैंने शॉर्ट कर रहा था मैं इस मार्केट को। So on this bounce also I had shorted, and then I was keeping that short position. I added some more here, 2nd March को, and 3rd March को जो हमारा YouTube live, I don't know whether I could do that last week, but this where I had added shorts, and ऐसा लग रहा था कि ये एक breakdown करेगा, and which is what happened. ये 3rd March को उसने breakdown किया था। So I had bought puts, Bank Nifty puts, 34,000, 35,000 के puts मेरे थे, and big quantity, and then there was a big fall here, gap down, and this gap down really मेरे 34,000 के puts काफी पैसा मिला था उसमें। Okay, but and the very next day when there was no follow up, okay, yeah, next day was very very interesting. At this point I thought that this just could be a breakaway gap and may not actually see these levels again. So this was my andaza. There were two views here. One is, normally this is like a ABC, so I thought this could just be a ABC wave. Okay, this is one scenario. Or, and on a bearish side, if this was a bearish scenario, this could have been a different count altogether. So in that case, it could have been a A, B, 1, 2, and 3, 4, 5. Could have been this, or C
see we could have gone all the way is this new next levels here. ये जो था ना ये लेवल ये सपोर्ट, तो मुझे लगा था कि यहाँ तक शायद जाएगा. डाउ जोन्स भी खतरनाक दिख रहा था. बट नेक्स्ट डे व्हेन द मार्केट स्टार्टेड विद अ गैप डाउन हियर, बट देन इट कुछ फॉलो अप मेजर ऐसा नहीं आया. एंड देन आई डिसाइडेड टू कवर माय शॉर्ट्स नियर द क्लोज बिकॉज क्लोजिंग में बहुत बढ़िया बाउंस आया और इस गैप में घुसने लगा मार्केट. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे. ओके, 9th March. So I covered most of my shorts, and then there was one trend line breakout in Bank Nifty. Okay, तो ये जो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ ना, उसके बाद द व्यू हैड टू बी बुलिश. सो देयर वाज, आज क्या हुआ है, आज गैप अप हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, जो हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट था वहीं पर रेजिस्टेंस लिया है, जहां पे रेजिस्टेंस लिया था वहीं पर रेजिस्टेंस लिया है और आज वापस नीचे आ गया. बट आई बिलीव देयर कुड स्टिल बी अ वन मोर लेग अप, 1 2 3 4 5, वन मोर लेग अप पॉसिबिलिटीज है ऊपर जाने की. सो दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी इज. ओके, आई हैव डन सम ट्रेड्स इन बैंक निफ्टी, सम प्रॉफिट्स एंड सम लॉसेस, बिकॉज जो मैंने पुट्स बेचे थे उसमें मुझे थोड़ा लॉस हुआ है. मैं दिखा था 35,000 के पुट्स मैंने बेचे थे, उसमें मुझे ऑलमोस्ट 7 lakhs का लॉस हुआ. ओके, बट देन आई हैड रोल डाउन द पोजीशन टू 34,500 का मैंने ये कॉल बेचे थे. ओके, जिसमें अराउंड 2.9 है, और ये सारे कॉल्स में अच्छा सा प्रॉफिट है. 34,700 कॉल तो नहीं बेचा था, 35,000 कॉल, या 35,000 कॉल which it was a straddle basically, 35,000 call and 35,000 put. So इस straddle में एक में पैसा आया, एक में गया. So but then 35,200 के कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट आया और 35,100 के कॉल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट आया. बट 35,000 के पुट में अच्छा खासा लॉस भी है. Okay, but then all in all profits है, net profits. Okay, so that's how it's been. Market is has tested the resistance and it has एक जितना फियर्स फॉल के बाद, राइज के बाद एक डिप तो आना जरूरी है. एंड नाउ इफ वी गेट अ डिप समवेयर हियर, इट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. यहाँ तक अगर कोई डिप मिले तो हमें डेफिनेटली बाय करना चाहिए, मुझे लगता है. There will be a good buying opportunity for another upside. So crude, since crude is showing the signs of topping out, okay, क्रूड में थोड़ा सा ऐसा एक दिख रहा है कि शायद ये टॉप हो रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में वी कैन बी लिटिल बुलिश ऑन द मार्केट्स. अनप्रेसिडेंटेड मूव्स विद निकेल, 2 दिन में निकेल ने जो किया वो अनप्रेसिडेंटेड था. ओके, ऑन दिस डे ऑल्सो आई हैड अ वेरी शॉर्ट पोजिशन. Okay, small short position, but I did not exit because I knew, and then I was trying to actually short more, and I did short somewhere here. Okay, इस कैंडल के बाद तो दिखेगा यहाँ पे एक हैंगिंग मैन जैसा है. तो इस कैंडल के बाद ओ थोड़ा फ्लिकरिंग हो रहा है यहाँ पे. ओके, इस हैंगिंग मैन के बाद ये जो हैंगिंग मैन था उसके बाद एक शॉर्ट बनता था ऑन दिस, एंड देन ऑन दिस बाउंस आल्सो आई हैड शॉर्टेड, बट देन आई कवर्ड इट क्योंकि अभी बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं है. अब देखोगे तो निकेल में हार्डली 16 लॉट्स का वॉल्यूम हुआ है. एक ही बायर है बस 2916 पे, और देयर आर 5 सेलर्स, दैट्स इट. सो निकेल में धमाल चल रही है. बट दिस आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेडर्स. जब ये ऐसा कुछ होता है तो ये अपॉर्चुनिटीज होती है, पर तुमको ये ट्रेड करने को होना चाहिए. अदरवाइज इफ यू आर कॉट इन अ रॉन्ग साइड यू कैन रियली गेट रिप्ड अपार्ट. ओके, सो मार्केट बहुत 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 तकलीफ दे सकता है अगर ऐसा हुआ तो. Okay, so I'll come back to my view about overall market later. आज के ट्रेड्स में टाटा स्टील एक है जो I was bullish right in the morning, and मुझे ऐसा लगता है कि टाटा स्टील showing a very good move on weekly. There is a breakout so to speak, and मुझे लगता है कि एक हायर हाई बना सकता है. Tata Steel, I think it's ready for a 5th wave, making a higher high. I do have a position in Tata Steel, but मैंने already holding है मेरा, और लेकिन आज मैंने उसमें इंट्राडे ट्रेड्स भी किए हैं. So there is a decent profit here of about दिखाता हूँ मैं मेरे completed शेयर दिखाता हूँ. या
आई बॉट राइट एट 56, आज जैसे ही वो ऊपर गया जाने लगा, मैं बताता हूँ कैसे एंट्री लेनी है। 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। या आज ये हुआ था ओपनिंग में, so जैसे ये हुआ, आई डिसाइडेड टू बाय द नेक्स्ट डिप। ओके, एंड हाउ टू स्पॉट दैट डिप is like this. So I was expecting a dip somewhere here, and in the futures I kept an order of 56, and God market obliged. If you can see 1028 को मेरी ऑर्डर आई है 1256 में, 1028, यानी अभी अगर मैं आपको ये दिखाऊं, मेरा चार्ट दिखाऊं, तो 1028 यानी ये जो कैंडल है 15, ये 1030 को बंद हुई, तो इसी कैंडल में मुझे वो ऑर्डर मिली है। okay, कौन सी वाली? ये वाली। एंड हेंस इससे सीखना क्या है आपको, मेरे ट्रेड देखे सीखना क्या है कि यू हैव टू बी पेशेंट एंड डिसिप्लिन अबाउट योर एंट्रीज। अगर वही मैं इमीडिएटली बाय करता, जैसे ये हैमर आया, उसको फॉलो अप आया ऊपर में, तो ये कैंडल के बाद अगर बाय करता इमीडिएटली, तो लॉस में रहता कुछ कैंडल्स के लिए, और फिर अननेसेसरी पैनिक हो जाता है। बट व्हेन यू गेट दिस डिप्स, योर एंट्रीज आर मच बेटर। सो 1028, सो अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने 8500 क्वांटिटी बाय की, उसमें से आधी क्वांटिटी मैंने 20 पॉइंट्स जब मिले तो निकाल दिया 56 में 77। So this is how I exited my half the position. This is like 10 lots. And then I again bought at 85, 93 and 90. Why? Because I believed this was really holding well. And तो इसके बाद तो मेरा ये स्टॉप लॉस है, मैंने मार्क करके रखा है, दिस वाज माय स्टॉप लॉस। ओके, एंड इसके बाद मैंने वापस बाई की with this stop loss. Okay, why? Because this was a breakout. Simple. ये ब्रेकआउट था, तो ये एक स्टॉप लॉस था। इसके बाद अब सिंपल डाउ थियरी भी अप्लाई करो, यहाँ पे समझ में आएगा। सो इसके बाद ये लॉन्ग था, आई एडेड, आई अगेन एग्जिटेड एंड अगेन एडेड, 99 में भी ऐड किया, फिर 1309 में निकला, और एंड में भी मुझे लगता है ये ऑर्डर पूरी नहीं आई, ये पूरी ऑर्डर नहीं आई। 1317 में भी मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक ही लौट गया उसमें। So anyways, so I'm still carrying 3825 quantity now, but it's a decent profit of about 4 bricks. Okay, yeah. So Tata Steel, and जब मॉर्निंग में जब वो डिप नहीं मिल रही थी, तो डिप नहीं मिला, तो मैंने जैसे ही वो गैप अप हुआ था, तो मैंने पहले सुबह 921 को मैंने पहले पुट्स बेचने शुरुआत की, शॉर्टेड पुट्स राइट इन द मॉर्निंग। लग रहा था कि ये इसके नीचे तो नहीं जाएगा, सो 46 में बेच के ये मैंने इसमें 15 पॉइंट्स मिले हैं 10 लॉट्स में। ओके, सो अगेन सीखने जैसा क्या है इसमें, यू कैन व्हेन यू स्टार्ट, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद सेलिंग पुट्स इफ यू थिंक दैट अभी एक ऊपर जाएगा, बट देन डिप मिला तो वापस बाय करो, फ्यूचर्स बाय करो, वो निकल सकते हो। अब टाटा स्टील लुक्स लाइक, ये ओवरऑल फोर्थ था, लुक्स लाइक इट इज स्टार्टिंग इट्स ओन फिफ्थ वेव, शायद 1326 क्रॉस कर लेगा, और शायद उसके भी ऊपर जाने की संभावना है। कि मुझे लगता है कि अगर ये ब्रेकआउट है, इसका ये लेवल बहुत बढ़िया लेवल है, इसका ब्रेकआउट है, सो आई थिंक एक सिंपल टारगेट जो हम निकालते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट नाउ अ मच बिगर टारगेट ऑफ around 1462. Now don't take this as an advice, okay, because and don't follow me. मुझको फॉलो नहीं करना भाई, okay? क्योंकि मैं कुछ कब निकल जाऊंगा आपको पता भी नहीं चलेगा, तो मैं आपको कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, but I'm just telling me how I approach the markets, how I trade. So this is the way it is. I'm just having a look at crude oil. It's still not giving me a good decent bounce. Anyways, currency. Okay, all right. अब हम जरा आते हैं सवाल जवाब पे भी, कि मार्केट व्यू टुडे सेट। या ओके, दिस इज आई थिंक अ रिसेंट पिक फ्रॉम अवर ललित का लाइव मार्केट सेशन हुआ था हमारा, उसका ये पिक है। I love Thursday not for expiry but for live session. Many pearls given. Need to watch twice. Need to be a good student. Practice a lot and stay with the community. Then one can be transferred from hell to heaven. Transferred from hell to heaven. You're already in heaven, dear.
एंड डोंट कंसिडर दैट प्रॉफिट नहीं हो रहा है मतलब तुम हेवन में नहीं हो. हाँ, अगर तुम challenges है, माइंड के इश्यूज आ रहे हैं मिरल, सो डेफिनेटली बी विद द फ्लॉक and be connected. That's the way to do it. And thank you for all the kind words, dear. I love this. I love conducting these sessions every Thursday. And thanks for pouring so much love and all these questions and comments. So अच्छे कमेंट्स, बुरे कमेंट्स, नो प्रॉब्लम, बट कमेंट्स करो, जो भी लगता है आपको कमेंट्स करो. दैट्स वेरी नाइस. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. मैं आप सभी को एक विनती करूंगा, हमारे सोशल मीडिया पे जितने भी पोस्ट आते हैं, आप डू कमेंट ऑन दैट, लाइक इट एंड promote Asta within your circle, okay? Because Asta is one of the best or the best. After joining Asta, how much chance to succeed in market? Sushma Kundaviti says, I know, hi, all Asta trainers are excellent and Geo is a well-designed program. This market is a 75% psychology game and Asta gives the best. Yeah, I mean, you can go and read the entire message. But after joining Asta, how much chance succeed? How much chance? I would say 66% chance. Because we have done a recent survey and 33% people are doing bad, 33% are doing okay, and 33% are doing good, okay, which is much bigger, much higher than our industry standards of 95% failures, okay. And we want to bring this number, make this number even better. We are heading towards that. We know we have absolutely wonderful plans for that. I know, we are going to come up with some residential programs also for our students, especially only for our students, and that is going to accelerate the entire growth process. It's going to accelerate your success. Okay. Yeah. So how much chance? Yes, you have a great chance to succeed here. If you are not with Asta, I don't know. If you don't educate yourself, your chances of success are next to nil. इतना मैं कह सकता हूँ. लेकिन आस्था में आने के बाद एजुकेटेड हो जाओगे, स्किल डेवलप होगा, और उसके बाद देन तुम्हारा खुद का माइंड का भी होता है. लेकिन उसके लिए भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं. हमारे आस्था सत्संग सेंटर्स है, वहां पे आप तो अभी मैं जो एक दौरा कर रहा हूँ पूरा इंडिया का, हर जगह जा रहा हूँ, हर स्टूडेंट्स को मिल रहा हूँ, मेरे लाइव सेशंस ले रहा हूँ, लाइव ट्रेनिंग ले रहा हूँ, लाइव मार्केट में सेशन ले रहा हूँ. उसमें भी बहुत सारी सच चीजें बताता रहता हूँ कि हाउ यू शुड अप्रोच मार्केट्स. आई शो माई लाइव ट्रेड्स एंड शो इट. सो चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे और आगे आके ये 66% भी अब आगे जाके बढ़ने वाला है. Yeah, as I already said, last 2 days I was in Kolkata. I'm in Bhubaneswar. Tomorrow there is a live session. Awesome. I am 306 student Pune. Is incredible, and it's the power of deep study based on technical analysis taught in Asta. And with the Asta mission, 1 lakh success stories. Yeah. I want you to be part of it. कि ये हमारा मिशन है और हम करके रहेंगे इस जन्म में करके रहेंगे. Okay. So thank you, Shankar. And the only way, the best way you can contribute is by being focused, by being disciplined, by having patience, okay, and having a belief in our system, in our setups, and in Asta, and being connected in Afufa. That's the way you can do it. So unless you are successful, this mission cannot be successful. Okay. So I want you, Shankar, to be part of those 1 lakh success stories. And soon, yes, I have absolutely no doubt. I went to Mumbai. I went to Pune 2 days. We had Asta Connect event. I had live session. बहुत धमाल किया, बहुत लोगों से मिला. It was absolutely awesome experience. And जितने लोगों ने अभी तक ऑफलाइन में जो अटेंड किया है, अगर आप YouTube लाइव अभी देख रहे हो, पुणे के स्टूडेंट्स है, कोलकाता के स्टूडेंट्स है, मुंबई के स्टूडेंट्स है, जिन्होंने लाइव सेशन देखा है, प्लीज पोस्ट योर नेम, post your location, and post your comments about how you felt, how was the energy, कैसा आया, धमाल आया कि नहीं आया. So वो जरूर पोस्ट करना अभी कमेंट्स में, okay, with your name and location and whichever geo branch you belong to, geo course and branch. Please, I do go and again watch this video and I do watch the comments. Thank you so much, guys. Okay, my exams 10th standard getting over on 4th April and my interest is whole geo series. Good, Mahesh Dalal, and strongly recommend you to join the 3G09 program, which is starting from April. Okay, starting with concept sessions on I think 2nd or 4th April. 4th April, yeah. So do join that 3G09 program. Seats are there, which may get filled very soon. Mumbai is getting full very soon, and then Hyderabad and Kochi branches are there.
So Mahesh, so proud of you, dear. After 10th, this is the best thing that can happen to you. I assure you this. So during your 10th holiday vacation, I strongly recommend all parents out there, all the parents out there, to put your kids into this learning. This is a life skill that they will be develop, and their maturity will go to a different level altogether. Not only they are going to learn about financial markets, but they are going to learn a lot of other virtues like discipline, focus, how to do homework. So they are going to get in the groove. Yesterday, let me tell you a story here. Yesterday, Kolkata, there was a guy, Divesh, just a graduate, pass out, is pursuing his chartered accountancy, and he made, on the live trading day, he made about 15,000 profit. And then yesterday in the eye opener, he brought his mother, and to show what it is. And then he was insisting her mother to do the course. Okay, एक बेटा अपनी माँ को बता रहा है कि यार तुम ये कोर्स करना ही है तुमको. मैंने उससे पूछा क्यों करना, क्यों ऐसा चाहते हो कि माँ ने करना चाहिए. तो ही जस्ट सेड कि आई वांट माय मॉम टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. एंड देन मॉम को जब माइक दिया, बोलती है कि बचपन में पिताजी पे डिपेंड करते थे, शादी हुई तो हस्बैंड पे डिपेंड करते, बड़े होने के बाद बेटे पे डिपेंड करेंगे. तो एक थोड़ा सा एक वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की भावना अगर हो तो अच्छी है. तो ही वाज इंसिस्टिंग एंड शी हैज एनरोल्ड फॉर द कोर्स इन 3G09. शी इज फ्रॉम कोलकाता एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी. एंड देन और एक बात, मतलब देखो कितना जमाना बदल रहा है. आज बच्चे भी पेरेंट्स को बोल रहे कि तुम ये कोर्स करो. ओके, और एक पेरेंट को देखे संकष्टी जैसे इंस्पायर हुई थी कि मेरी माँ इतना होमवर्क क्यों कर रही है, तो मुझे भी इंटरेस्ट लेना चाहिए. दैट इज हाउ शी गॉट इंस्पायर्ड. सो दिस इज लाइक विन विन एंड पुश पुल. सो आई थिंक दिस इज द एनर्जी एक्सचेंज विच इज ब्यूटिफुली हैपनिंग विद इन आस्था एंड आस्था स्टूडेंट्स. एशियन पेंट और कई स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, तो क्या अभी इस मार्केट में इतने स्विंग की तरह देख कर बाय की कर सकते हैं क्या? रिप्लाई मी सर, लव यू फ्रॉम नागपुर. लव यू टू अनिकेत. Yeah, let me just give you a gist about what my view is about overall markets. So there are stocks which are showing the, but I would not, trading bets are fine. Trading bets are fine, but as a long-term investment, I'm not very sure. Because ये अभी जो बाउंस आ रहा है, आज ये जो बाउंस आ रहा है, आया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर वापस सेलिंग आ सकती है. तो अगर यहाँ पे बात किया है, यू कैन सिंपली गेट आउट ऑफ इट. ओके, बट ये जस्ट रीटेस्ट करके वापस नीचे आ सकता है. ठीक है, हाँ, क्रूड ऑयल अभी वापस नीचे गिर रहा है तो एशियन पेंट्स ऊपर जाना है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल बिकॉज yes, crude is one of the byproducts for paint companies. Yeah, one of the raw materials, not byproducts, raw materials. But yeah, these good stocks like DMAT and all, I think you should really look to invest as a long-term investor. Maybe yes, and Bharti Airtel looks good. I'm loving that stock. DMAT है, भारती एयरटेल है. और मैंने किसी ने, कुछ लोगों ने मुझे लास्ट टाइम वेब सोलर के बारे में पूछा था. मैंने कहा था आई एम गोइंग टू होल्ड. लास्ट टाइम का मैं चार्ट वापस एक बार दिखाता हूँ. एंड वेब सोलर हैज गॉन अप फ्रॉम देयर, 107 तक आया है. मैंने कहा था कि 117 से 120 का टारगेट हो सकता है 90s का लेवल से. तो या भारती एयरटेल, दिस इज अनदर गुड स्टॉक. सो देयर वाज अ नाइस बुलिश एक्शन इन दिस वीक. ओके, सो this is a good one with a proper stop loss here, 650. And web solar, I'll just share this one as well. देखो, last Thursday, it was somewhere here, I guess. Yeah, and last Thursday, somewhere, one of these YouTube lives, I was talking about, people asking me, sir, क्या करें अभी इसका वगैरह वगैरह. तो I said, I'm holding this stock. And obviously, उसके बाद थोड़ा ऊपर आया है. मुझे लगता है कि 120 तक जाके वहां पे वापस हर्डल ले सकता है. So, this stock may do this, is what I believe. Okay. पर जाके अभी यहाँ से वापस नीचे भी आ सकता है. So, let's see what happens. This is what I believe may happen. और क्या कर रहा है भाई? ओके, जो लॉस था अभी 6 लाख का लॉस था, अभी 4.5 लाख का है. So this is what I mean. So you don't have to actually look at this and this figure. Whenever you look at this,
this should not or must not bother you at all. So ये 4.5 लाख का लॉस है तो मुझे बॉदर नहीं करता है. ओके, देयर वाज एट टाइम्स आई, ऐसे भी होता है कि 25 लाख का लॉस है, वहां से वापस 50 लाख का प्रॉफिट में भी आ जाता है. ओके, सो दिस इज ऑल फाइन, इट डजंट बॉदर मी एट ऑल. ओके, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी व्हाट इट डज. मुझे एक 4,800 के करीब अगर एंट्री मिलती है तो मैं लेने वाला हूँ. मेरे एक ऑर्डर ऑलरेडी 8, sorry 4 नहीं 8853, so I'm already keeping an order there to sell. Okay, so let's see next सवाल क्या है. Comments. Lakshmi Savasta sharing their journey from Griya Lakshmi to Mahalakshmi. Now there was a nice Women's Day was celebrated across the world, but I would like to share my views about Women's Day. There was a video, I had a session with Dr. Pramod Tripathi ji, and we shared certain thoughts about it. But let me share some hatke thought that I have about it. I did not share that in my other video, but I truly believe, this Women's Day thing has come up from Western culture, right? Because I think the origin was, there was a revolt by women who were working, and there should be a common standard about the wages. They're being paid less compared to men. Why? Because they were women. So they did a revolt, and from that day, they decided to celebrate this day as a Women's Day. But I always believe, every day is a Women's Day. Why there is no Men's Day? Why? So why the rest of the Men's Day or what? So the fact that you have Women's Day itself tells there is inequality. You accept inequality. See, and I give a very funny example about this. If I have to prove that there is corruption in a country, you just see whether the country has anti-corruption bureau. If there is anti-corruption bureau, which means there is corruption, right? So you don't have to prove there is corruption or not. The fact that there is anti-corruption bureau, there is corruption. Okay, without that, why you need this? So there is inequality. Hence you have to actually celebrate such days. So why Women's Day? Why not Men's Day? Okay, there is Mother's Day, there is Father's Day. That's fine. But why Women's Day? It's anyways, but एक बहाना चाहिए अगर सेलिब्रेट करने के लिए तो गुड, एज अ बहाना मुझे अच्छा लगता है. कोई भी बहाना चलेगा यार, मजा आना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए. लेकिन ये हमारा कल्चर कभी नहीं था. हमने हमेशा रिस्पेक्ट किया है विमेन का. हमारे पास देवियां हैं, सरस्वती है, दुर्गा माँ है, शक्ति है, तो कितनी सारी देवियां हैं. सो लक्ष्मी माता है. सो यही गृह लक्ष्मी टू महालक्ष्मी का जो प्रवास है, तो हम तो चाहते हैं, हमने तो हमेशा, आई ऑलवेज सीक ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द विमेन फॉर दिस मिशन. सो विमेन, नारी शक्ति का प्रभाव ही कुछ अलग होता है भैया. और हमारे कल्चर में हमने कभी भेदभाव किया ही नहीं है. हमने जितना महत्व देवों को दिया है उतना ही देवियों को दिया है हमारे कल्चर में. सो एनीवेज, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. I just wanted to share my thoughts about it. Every day is Women's Day. Okay, it should be Women's Day, and every day is Men's Day. Yeah, every day is day to celebrate. So I there should be a celebration every day. That's what I believe. So every day is a celebration day. Just enjoy this gift of life. Okay. Happy Women's Day to all Lakshmis of ASTA. Prashant Chaudhary कहता है, Avadhut sir and entire spirited team of ASTA, thanks for giving such a great career. Thank you guys. Thanks for loss of love and respect, Sushma Jagtap. Yeah. Thank you for wonderful comments. So this was a picture from the Pune live session where we could meet so many Lakshmis of ASTA, and we got an opportunity to take a picture with them. And yes, this position is like, we are all together, always all for one for all, and we are united in this mission. Okay. And you can say these are all from different ACs in Pune. And this was another video which is out there on YouTube. Please go and watch. This was published on 8th of March, Women's Day at 8 p.m. So do go and watch this video as well. A journey from Griya Lakshmi to Mahalakshmi. Okay, some of the Lakshmis of ASTA have shared their views and their success stories and their journey, from failure and success and failure and success. So do go and watch. This is going to be very inspiring for you. All right. So what next? I have an eye opener. Okay, on 12th March, 9 a.m. to 12 p.m. So that's day after tomorrow.
Okay, and this is in Bhubaneswar, and this is offline. Okay, I'm in Bhubaneswar and I'm going to conduct an offline eye opener in Bhubaneswar. Let me tell you, in Kolkata, there were people who traveled you from Guwahati, Assam, and so many other places. Okay, people took flights to come and attend the eye opener and meet me personally. So I'm there in Bhubaneswar on 12th in the morning. That is, I think the timing is 9 o'clock in the morning. Reporting is going to be early, 8 o'clock. So yeah, 9 a.m. to 12 p.m. So do watch. It's a wonderful, wonderful opportunity to meet personally and exchange energy. Okay, so do come. I would love to see you there in Bhubaneswar, 9 a.m. to 12 p.m. on 12th. That is day after tomorrow. That is Saturday morning. Okay. Tomorrow we have a live market session with my students. So after tomorrow, I'll be doing this eye opener while I'm in Bhubaneswar. All right. So yes, Prasad, do you have anything to say? Yes, there is a question from below Hirkani. मैंने आपका आई ओपनर अटेंड किया था सर, मुझे ऑप्शन So there are a few questions in the chat box also. इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, कुछ टिप्स बताएं. सिर्फ आई ओपनर किया है बट ऑप्शंस Just based on आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग मत करो. We don't recommend our students to trade in options without doing a foam seminar, the third level जो है हमारी foam FNO futures options, उसके बिना आप बिल्कुल भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग मत करना आइडियली, बिकॉज आपको कुछ भी ज्ञान नहीं, आप पैसा लॉस करोगे. मैं आपको आज की एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जैसे मार्केट खत्म हुआ था, थोड़ी देर में मैंने देखा मेरा व्हाट्सएप मैसेज पे मेरे ही स्टूडेंट का एक मैसेज आया है कि सर आई लॉस 60% ऑफ माई कैपिटल. And this is unbelievable. And this student has been doing consistently good for last so many months. Consistently good for last so many months. But he says, sir, मैंने 60% का लॉस किया है. मैंने उसको मैसेज डाला, बाद में मैंने उसको कॉल किया. And then I came to know that he was just buying options. And he says, sir, I don't even know how could I do it. Okay. तो मैंने कहा, this is exactly what happens. And मैंने कुछ उसको टिप्स दिए हैं कुछ, लेकिन आपको मैं पब्लिकली नहीं दूंगा वो. Okay, because this is something special. So I don't want to give that to you guys here, because वो समझने की एक क्षमता होनी चाहिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. So I don't want to talk about it, but I did do proper counseling. I was on the call for about I think 20 odd minutes and even more. But then this happens, and this is absolutely okay if this happens, because this happened with me. I was doing so good, but in one day I lost 70% of my capital. तो इसने तो 60% ही लॉस किया है. तो उसने पूछा कि सर हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट. आई सेड डोंट यू पुट इन मोर कैपिटल नाउ. ओके, जो 60% गया 10% और डालो और 50% कर दो और वहां से शुरू करो, क्योंकि वो तुमको दिखाएगा कि यस, तुमको ब्रेन को लगे या मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ. कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ही हैज बीन डूइंग कंसिस्टेंटली वेल फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 6 to 9 months. ओके, तो उसमें एक आध दिन ऐसे हो जाता है. ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसी भयानक होती है, and he could not believe that he could do it. And I'm sure lot of you can do it, and lot of you do it. This is mainly, it comes out of revenge trading. You incur some loss and then you can't handle that loss, and in order to recover that loss you end up doing more trades and end up losing more and losing more and losing more. At that time you have to just get out of your screen and just get out, do a walk, think about it. What am I doing? Is this my process? Is my process telling me that? और मेरा चेहरा याद करो, मेरी आंखें याद करो. ये चित्र चाहिए तो लेके रखो, और तभी तुमको ये फोटो याद करो. जब जस्ट गेट आउट ऑफ योर लैपटॉप, जस्ट वॉक एंड रिमेंबर दिस फेस. आर यू सपोज टू डू दिस एंड यू आर नॉट सपोज टू डू दिस. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो रिमेंबर दिस एंड देन यू विल नॉट डू इट. इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके, थोड़ा सा ब्रेक करो. आपके बीच में एक दीवार लाओ, ये स्क्रीन और तुम्हारे बीच में एक दीवार लेके आओ. 1 crore, just take a walk and then see what happens. Okay, otherwise mind will take over and then you will end up doing a lot of mistakes. Okay, so don't let mind take over your intellect and your wisdom. Okay, so that's again eye opener है मतलब है, करना है तुमको. And upcoming eye openers मैं दिखाता हूँ कब है. कहाँ गया? हाँ,
ये देखिए हिंदी में है स्वस्ति प्रीमियम, यहाँ पर है भुवनेश्वर में। दिस इज द फिजिकल लोकेशन, दिस इज द ऑफलाइन में है। ओके, ये लोकेशन है, वेन्यू है, वेन्यू दिया हुआ है। एंड 19 एंड 20 को ऑनलाइन में है, 19 मार्च एंड 20 मार्च। ओके, इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो डू रजिस्टर, ऑनलाइन में भी बहुत मजा आता है। okay, so do register and you can definitely get to know more about ASTA, but not only that, you will learn a lot. जिन्होंने कल कोलकाता का किया था उनको तो एक अपॉर्चुनिटी मिली लाइव सेशन देखने का। सैटरडे को मार्केट बंद है तो शायद आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, लेकिन बाकी भी बहुत कुछ सिखाया जाएगा। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या है भैया? Yeah, so these are like the online ones, 19 and 20. Okay, so that is going to be online, evening 6 p.m. The link is in the description box, so you can make the payments and join the eye openers. Market view and today's trades, वापस अब एक बार आऊंगा 17 मार्च को, नेक्स्ट वीक को आपके पास वापस हाजिर हो जाऊंगा with my trades and with my views about the market and so on. So what's my view now about the markets? I believe market में अगेन करेक्ट अभी थोड़ा सा। मैंने कल भी एक व्यू डाला था कि थोड़ा साइडवेज टू अप रहेगा, लेकिन आज अप हो गया, वापस नीचे आ सकता है। तो जब साइडवेज रहता है मार्केट, जब अप रहता है तो दूसरे दिन डाउन पकड़ सकते हो। सो टिपिकली ऐसे ही होता है, एक दो दिन का मोमेंटम चलता है, बाद में वो फिजर आउट होता है। निफ्टी क्या कर रहा है देखते हैं। या ओके, देखो ये जो है सपोर्ट, मेरा एक on this day I made a view, okay, on this day, and I shared my view with everybody. On this day when there was a gap down, right, I believe, is it like a breakaway gap? Okay, and if market had not conquered this level and 16,000, then it would have been very, very bad. So why? Because this seemed like a third wave, but it was not the case. Next day there was a bounce, and then I had to change my view. What my shorts, I went long on certain things like Tata Steel and all, and dollar मैंने short किया था, बहुत सारे ऐसे ट्रेड किए। यूरो आईएनआर लॉन्ग किया था, सो यूरो आईएनआर बाय किया, क्योंकि यूरो आईएनआर भी अच्छा खासा बाउंस कर रहा है। मुझे लगता है यूरो आईएनआर और भी ऊपर जा सकता है, और भी थोड़ा ऊपर जा सकता है। सो आफ्टर दिस आई हैड टू चेंज माय व्यू। नाउ I believe next day now we are back here. So if this was ABC, now this is a big if, but if this was a decent ABC structure, okay, then we are likely to go up, but this can also be something like this. Yeah, एक बार इधर आ सकता है मार्केट। एक ओवरऑल ऐसा एक व्यू है, यस। सो अगर इस ट्रेंड लाइन पे तो रेजिस्टेंस लेना बनता ही था। सो वहां से आज ओपन जैसे गैप अप हुआ तो देयर वाज नो फॉलो अप, तो गैप अप के बाद सीधा नीचे आना ही शुरू हो गया। ओके, इसने थोड़ा सा गैप फिल किया और होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है कि और एक अगर ऊपर भी जाता है तो वापस नीचे भी आ सकता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव इज लाइकली टू हैपन। ओके, somewhere here we may take support, so we may again come back to about 16,000 and then we may go up. Okay, these are possibilities, but if we come below this level again, that won't be a good sign. All right, but now war situation, I was telling a lot of students that just US oil का चार्ट देखो, और मुझे लगता है कि टॉप इज इन प्लेस एंड crude is likely to fall in coming days. Okay, so if crude, obviously Ukraine बोल दिया बस करो यार, कितना आर्म ट्विस्टिंग करोगे, हम नहीं लेके आएंगे नाटो को इधर। सो दे आर इंसिस्टिंग एंड दे हैव नाउ गिवन अप ऑन दैट रिक्वेस्ट।
सो दिस इज अ वेरी सेंसिबल थिंग दैट दे हैव डन. यू नो, किसी की आंखें ऐसी हो गई है, आंख में अंगार है, बोलता है तू उधर जाएगा तो मैं कुछ भी करूंगा, तो तभी माफ कर दो भाई, बिकॉज इट्स अ लिटिल बिगर फोर्स देन यू. सो थोड़ा पीछे हट जाओ, एंड दैट इज गुड फॉर ओवरऑल अर्थ, बिकॉज ये धरती किसी की बाप की जायदाद नहीं है. ओके, ये धरती माँ है, माँ. और इसके लिए मैं कहता हूँ विमेंस डे, हम तो धरती को भी माँ कहते हैं यार. ओके, और भारत को भी भारत माता कहते हैं. तो विमेंस का इनइक्वालिटी आया कहाँ से? इसलिए मुझे ये विमेंस डे का समझ में नहीं आता. हम तो धरती को भी माँ कहते हैं, और भारत देश को भी भारत माता कहते हैं. ओके, तो ये धरती किसी की बाप की जायदाद नहीं है. के नाम तो नहीं लूंगा. तो इनको कोई हक ही नहीं है किसी को यार, कि ऐसे वॉर करे, तू तबाह कर दे, ये डालो, न्यूक करो. ये आपका, आपके तो बाप की जायदाद नहीं, आपको किसने किया? एंड देन ये जो आप कर रहे हो, जो नुकसान होगा, जो समुद्र में जो फिश है उनका नुकसान होगा, जो एनिमल्स है उनका, उन्होंने क्या किया है? उनका क्या कसूर है भाई? जो भी होता है उनका क्या कसूर है? तो ये सब नहीं होना चाहिए आइडियली. एक दूसरे को भड़काते रहते हैं ये वेस्टर्न नेशंस ने, जो भी किया यूक्रेन को, हाँ तुम यूरो में आ जाओ, तुम नेटो में जाओ. तो इनको, इनसे नहीं चाह देखा गया, तो वो जो भी हुआ ठीक ही हुआ. मुझे तो लगता है जो हो रहा है हो ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा निकले यार वहां से. तबाही बंद करो. ओके, बिकॉज आई थिंक वी ओ अ लॉट टू दिस अर्थ, मदर अर्थ. के वी ओ अ लॉट, एंड हमने जितना नुकसान किया, आई थिंक वी ओ अ लॉट. आई थिंक वी शुड रियली बी रिस्पॉन्सिबल. ओके, ह्यूमन बींग्स वी ऑल शुड बी. ओके, वंस. सो या दैट्स इट. लगता है कि अभी ये वॉर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और अनलेस, और एक अच्छा सेंसिबल चीज किया सबने, कि किसी ने किसी को भड़काया नहीं जाता. कोई, नो बडी एक्चुअली एंटर्ड इनटू देयर, दोनों के झगड़े में कोई आया नहीं, अच्छा हुआ. एंड यूक्रेन ऑल्सो रियलाइज यार कोई मुझे हेल्प करने वाला नहीं है, तो चलो पीछे हट जाते हैं. तो जो भी हुआ अच्छा हुआ. थैंक्स. क्रूड थोड़ा सेटल हो रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है. अगर ऐसा है तो क्रूड में मुझे लगता है कि फिफ्थ वेव हुआ है, और अभी क्रूड नीचे आ सकता है. नीचे आ सकता है तो मार्केट थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा. बट स्टिल क्रूड एज एट अ वेरी एलिवेटेड लेवल्स, नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी. एंड डॉलर के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई इज होल्डिंग द रेट्स 77 78 के ऊपर जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि डॉलर में भी एक चलो जरा डॉलर का और इसका चार्ट दिखा के हम बंद करेंगे इसको. यूएसडी आईएनआर, आज मैंने यूएसडी आईएनआर बाय किया था. मैं बताता हूँ मेरा यूएसडी आईएनआर का ट्रेड. ये देखो, ये वाली चार्ट है. तो इस हैमर के बाद, 11 11:30 के बाद मैंने बाइंग किया था करेंसी में. डॉलर के ट्रेड दिखाता हूँ. 940 मैंने पहले लिया था, जो लॉस में गया, बाद में मैंने एवरेजिंग किया 42 42 42 30 43. सो ये लेवल्स में मैंने बाइंग की, और बाद में ऑलमोस्ट 15 से 20 पॉइंट निकाले हैं. 58 में निकला, 62 में निकला, 58 50 में निकला, 56 50 में निकला. सो इट वाज ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स आई कुड गेट. एंड द प्रॉफिट इज ऑल्सो डिसेंट, 8 lakhs प्लस 8 bricks फॉर द यूनिवर्सिटी. सो डॉलर, I don't want bullish, ultra bullish. I was just doing a swing trade here. But अगर डॉलर ये वापस इस लेवल्स को कॉन्कर करता है, कौन सी लेवल्स को? इस लेवल्स को अगर ऊपर जाता है, सो गड़बड़ हो सकती है. आई होप दिस इज अ टॉप. फिंगर्स क्रॉस. एंड नाउ वी हेड नॉर्थ, सॉरी साउथ. इंडियन lot of investors are looking towards India. So अगर डॉलर गिरा, देखो अपना मार्केट न्यू हाई कब करेगा? ये जब होगा तो अपना मार्केट न्यू हाई करेगा. तो लेट्स सी वेदर इट दिस हैपेंस. जब तक ये नहीं होता, वी कांट बी बुलिश ऑन डॉलर, बेरिश ऑन डॉलर एंड बुलिश ऑन इंडिया. ओके, देयर विल बी स्विंग्स, मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा, साइडवेज रहेगा. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक विल हैपन दिस ईयर. निफ्टी may not make a new high. It may remain kind of sideways, may not make a new high, may remain sideways. But this is, I think, just a good retracement, sound retracement. So let's see what happens. मुझे लगता है कि यहाँ तक तो टारगेट बनता है आने वाले दिनों में इस ट्रेंड लाइन तक. हाँ, जो मैंने दिखाया है ऑलरेडी, यहाँ तक इवेंचुअली जा सकता है. फिर वहां से वापस, वहां से क्या हो सकता है? ये हो सकता है.
ऐसे कुछ हो सकता है, यू नो. सो लेट्स सी, ये चलता रहेगा खेल, ट्रेडर्स को ट्रेड करने मिलेगा. डाउ जोन्स इज स्टिल होल्डिंग दैट लो ऑफ द वॉर डे. हमने लोअर लो किया था, बट वॉर का जो लो है वो अभी भी होल्ड कर रहा है और उसके ऊपर आ चुका है वापस इस लेवल के. सो डाउ जोन्स अगेन इज शोइंग कि नहीं नहीं भैया, हमको नहीं गिरना है. अगर ये ब्रेक डाउन रहता तो बहुत गड़बड़ हो जाती, बट आई थिंक इट्स जस्ट डेप्थ ऑफ करेक्शन. वन मोर वेव पॉसिबली कुड बी स्टिल पेंडिंग. ओके, बट मेक नो मिस्टेक, डाउ इज एट अ फिफ्थ एट सुपर साइकिल लेवल, ऐसा मुझे लगता है. ओके, so let's see. I think Indian markets could be a little better than Dow Jones or US markets. Okay, so once again, do tell your friends and relatives about the eye openers that we have. The link is in the description box. It's just 590 rupees and you can attend these eye openers, and you can even sponsor your near and dear ones if you are our students, and let them make their own decision. Don't push anybody to attend, again. And if you find someone talking about ASTA, let me tell you, we don't give any referral fee or anything or any freebies to anyone for referring somebody to ASTA. We don't give anything, absolutely. If somebody is referring, they are doing it for your own good, not for their own benefit. Okay, and this has been a policy in ASTA for lifelong. I mean, for ages. I have never done this before. Now, if you want, people do, okay, तुम एक पे एक फ्री, आपको ये एक एडमिशन लो, दो लेके आओ वगैरह वगैरह. हम ऐसी चीजें नहीं करते. तुमको अगर किसी को रिफर करना है तो उसके भलाई के लिए लो, तुम्हारे खुद के भलाई के लिए नहीं करो. ओके, सो इफ यू फाइंड समबडी टॉकिंग अबाउट आस्था एंड टेलिंग यू, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज लोगों को लगती है कि क्या ये MLM है, नेटवर्क मार्केटिंग है. ऐसा कुछ भी नहीं है. देर आर पीपल हु डू ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. तुम 5 लाख रुपया लेके आओ, 10 लाख रुपया लेके आओ, फिर उसमें से उसी पैसे को रोल करके उनको कुछ परसेंटेज देते रहते हैं. ऐसे धंधे हम नहीं करते. वी आर प्योरली इनटू टीचिंग. वी डोंट गो एनी नेटवर्क मार्केटिंग और MLM. सो ऐसा कोई अगर तुमको बता रहा है या ऐसा सोच रहा है तो दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, वी आर प्योरली इनटू एजुकेशन एंड टीचिंग. व्हाई? Because we are working here for a mission and we want your success, period. All right, so thank you so much guys. I really enjoyed this session. It was wonderful being with you. कुछ सवाल अगर होंगे तो मैं देखता हूँ. एक मिनट. Ninath, I have lost 6.5 lakhs in 2 months in options, sold everything from my portfolio. I need to do a fresh start in equity. Please guide. Please guide. Get back to your discipline and process. How can you lose entire capital and so much? Are you not following your risk management rules? Okay, why are you so greedy? Why do you want to make big? And why can't you follow simple discipline? So don't worry. If it has happened, find out the reasons why it happened. Why it happened. Find out the reasons and just don't do it. Don't repeat your mistakes. Doing mistakes is okay, but repeating a mistake is a crime. Okay, so please identify what are your mistakes, and first just stabilize first. If you are in crisis, just stabilize. Identify what are your strengths, what made you do profitable trades. Focus on your strengths and then get back with little baby steps, and then you start walking and running and then flying. Okay, Yashoda Mehtre, respected sir, namaste. I have started my journey in market from last few months, but it is a silver commodity, but I have lost. Please explain the strategy about it. What silver commodity strategy? Strategy is same, for whatever is there for crude, it's same for silver, So silver generally evening ko usme thoda so movement aata hai. So do watch typical evening action, and then you will know. Go back and do some back testing and see how silver behaves in the evening. Okay, Rajesh, because technical charts works the same way, the way they work with other commodities as well. Okay. पैसे कैसे रिकवर कर सकते हैं अगर लॉस हुआ? पैसे रिकवर मत करो, नए प्रॉफिट्स करो. तुम ये रिकवरी के चक्कर में क्यों पड़ते हो यार? जस्ट फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड एंड जस्ट स्टार्ट, डू अ फ्रेश स्टार्ट. फॉरगेट ये 6.5 लाख का जिसका लॉस हुआ है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. नहीं, डू अ फ्रेश स्टार्ट एंड डू प्रॉफिट्स ना. व्हाई यू वांट टू रिकवर लॉस? उतना ही पैसा कमाना है क्या तुमको ये 6.5 लाख रुपए कमाने हैं, या कुछ जो भी लॉस हुआ है तुम्हारा, उतना ही पैसा कमाना है लाइफ में और कुछ नहीं करना है. तो लॉस पे क्यों फोकस कर रहे हो? गेट आउट ऑफ दैट साइकी. ओके,
And even if you have done 2 lakh loss or 5 lakh loss or 10 crore loss, whatever it is, you trade for making new profits, and that profit can be 10 times or 100 times of your old losses. जो मैंने 70% कैपिटल लॉस किया था उसके 10 गुना से ज्यादा प्रॉफिट मैंने किया है अभी तक, उससे भी ज्यादा. ओके, सो जस्ट फॉरगेट अबाउट योर लॉसेस वंस एंड फॉर ऑल. डोंट एवर मेंशन इट टू एनीवन. ओके, डोंट मेंशन इट टू एनीवन. अपने आप को भी नहीं बताना कि मैंने लॉस किया, मैंने लॉस किया, मैंने लॉस किया. डू अ फ्रेश स्टार्ट. अभी मैं प्रॉफिट कैसे करूं, वो लॉस रिकवर के चक्कर में नहीं, नया प्रॉफिट कैसे करना है वो सोचो. बिलव हिरकनी, मैंने आपका आई ओपनर अटेंड किया था सर, मुझे ऑप्शन में फियर होता है. अरे भैया, आई ओपनर किया तो क्या ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे? पागल लोग. नहीं करना है तुमको, सीखना है पहले. एडमिशन ले लो जियो प्रोग्राम. ये मार्केट को पैसा दोगे तुम, लॉसेस करोगे, लेकिन कोर्स नहीं करना है. कैसे है यार, खुद में इन्वेस्ट करो ना. तुमको मैं, अरे 99% पीपल लूज मनी इन एफ एंड ओ यार. और जो सीखे नहीं तो बिल्कुल सब लोग सब पैसा दे के बैठोगे. ओके, Manak Das, you said 65% chance. What is difference between I trade companies call and trading after education? Companies call and trading after education. What's different? Because you will be taking educated guesses. ऐसे कुछ भी नहीं है, हवा में तीर नहीं लगाओगे. That is the difference. There has to be a methodology, एक मेथड, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए कि भैया ये लॉन्ग है क्या, ये शॉर्ट है क्या. उसके बाद तुमको कुछ स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी होनी चाहिए एफ एंड ओ की. Okay, some spreads, some risk management strategies, hedging strategies. उसके बिना अगर कुछ भी करोगे तो क्या क्या होगा. अगर बिना एजुकेशन के कुछ भी करोगे, मुझे बताओ यार, तुम बिना एजुकेशन के ऑप्शन ले रहे हो. अरे घर में कोई बीमार हो गया तो किसी ऐसे भोंदू वैद्य के पास जाओगे अपने पेशेंट को लेके, देखते हो ना, हाँ एमबीबीएस डिग्री है, लिखा हुआ है एमबीबीएस, तो ही जाते हो ना. या सर्जरी करनी है तो किसी के पास भी जाओगे, वो देखोगे ना उसका एजुकेशन है तभी कर सकता है सर्जरी. तो मार्केट में क्या एजुकेशन की जरूरत नहीं है? मार्केट में जरूरत नहीं है एजुकेशन की, वो चलोगे. तो विल यू सिट इन अ एरोप्लेन वेयर द पायलट इज नॉट एजुकेटेड? तुमको बोला नहीं नहीं, हाँ उसने थोड़ा वीडियो देखा है, यूट्यूब वीडियो देखा है, अभी वो पायलट प्लेन उड़ा सकता है. हाँ, यूट्यूब वीडियो देख के प्लेन उड़ाएगा, तुम जाके बैठोगे ऐसे प्लेन में? तो खुद क्यों करते हो? प्रॉपर एजुकेशन ले लो यार. ओके. I'm sorry if I'm talking a little harsh, but I don't understand why people are ready to pay to God market. Market is a very expensive teacher, and let me tell you, वो God नहीं, वो demon है for people who are not educated. Even for people who are educated, who have greed and fear and all these emotions, उनके लिए भी वो demon है. तो तुम्हारे चांसेस तो कुछ भी नहीं है अगर तुमने एजुकेशन नहीं ली. ठीक है, सो प्लीज स्टॉप ट्रेडिंग फॉर गॉड सेक. मैंने 30 साल अभी होने को आए मेरे को मार्केट्स में, मैं बताता हूँ तुम ये कुछ नहीं कर सकते. अरे सीखने के बाद भी चैलेंजेस आते हैं लोगों को. बिना सीखे तो आपके कोई चांस ही नहीं है जीतने का, चांस ही नहीं है. 2-3 ट्रेड चले तो क्या ट्रेडिंग कर लोगे. ओके, एक दिन ऐसा आएगा सब दे के बैठो. ठीक है, ओके. एंड अनलेस यू आर वेरी 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 स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन. ओके, okay, so I once again thank you so much for attending this session. I hope you liked it. If you liked it, please click on the like button right now. Click on the like button and do subscribe to the channel if you have not already done so. सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. और अगर आप चाहते हो कि अच्छे अच्छे लोग जुड़ जाए आपके साथ आस्था में, या आप जुड़ना चाहते हो तो जरूर आई ओपनर अटेंड करना. And I'm just going to show this image and I'm going to leave this session. Thank you so much. Love you all. God bless you. And बहुत बहुत मस्त जिंदगी रहे आप सभी की. Just enjoy life and enjoy every moment of this gift called life. Thank you so much. Bye everybody.